Let's be seated. कृपा करून खाली बसूयात. Now we'll hear a testimony from Brother Ajit Kurian, who has come from Agartala, Shillong. अगरतला के शिलोंग से भाई अजीत कुरियन के साक्षी को वर्तमान हम लोग सुनेंगे. अगरतला शिलोंग या ठिकाणून असलेले ब्रदर अजित कुरियन यांची साक्ष आता आपण ऐकूयात. The name of the Lord Jesus be magnified. At the outset, as I start my words, it is my request that you would pray that every word that comes out of my mouth should be only for the glory of God and for the edification of the church, and all the goodness that God has done for my soul may be spoken only. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर ने मेरे जीवन में की हुई भलाइयों को आपसे वर्णन करने के पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे वचनों के मैं जो कहता हूँ, जो प्रभु की गवाही देता हूँ, उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए. या ठिकाणी उभे असताना ज्या वेळेस मी आपणासमोर माझी साक्ष सादर करील, माझ्या जीवनामध्ये घडलेल्या गोष्टींबद्दल वर्णन करील, त्यावेळेस मी परमेश्वराकडे अशी प्रार्थना करतो की या सर्व गोष्टींद्वारे फक्त परमेश्वराच्या नावाचा गौरव व्हावा आणि आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढ व्हावी. My God has been a God of impossibilities all through my life till now. मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सारे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर होके अब तक रहा है. आतापर्यंत माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वर असंभव ते संभव करणारा होऊन राहिला. He enabled me to be born into a God-fearing family. My grandparents, my parents, my sister and I, we used to go to church, but that was only on a Sunday. मेरे परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का भय रखने वाले परिवार में बढ़ने के लिए मदद किया. मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मैं केवल परमेश्वर की आराधना के लिए उसके कलीसिया में जाते थे, लेकिन केवल रविवार को. परमेश्वराच्या दयेने परमेश्वराच्या भय मानणाऱ्या कुटुंबामध्ये माझा जन्म झाला, परंतु माझे आजोबा आणि आजी, माझे आई वडील व मी फक्त रविवारी परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये जायचो. Life was good, so I didn't have any need for me to grow closer to Jesus. और मेरी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, इसलिए मसीह के और नजदीक जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी. माझे जीवन सुरळीत चालू होते, त्यामुळे परमेश्वराच्या अजून जवळ जाण्याची मला गरज भासली नाही. In that time, the Lord spoke to my parents, and my mothers too came to understand this truth and had to face a lot of persecution, not only in a physical manner, but also through many jibes in her office as well as in her society. और मैं उस समय में परमेश्वर ने मेरे माता पिता से बात किया और मेरी माँ इस उद्धार में आई, और उस समय मेरी माँ को कई क्लेशों से गुजरना पड़ा. केवल शारीरिक रूप से क्लेशों में नहीं, लेकिन उनके कार्यालयों में लोगों ने कई ताने मारकर उनको परेशान किया. आणि ज्या वेळेस परमेश्वराने माझ्या आई वडिलांची भेट घेतली, त्यावेळेस माझ्या आईद्वारे आम्ही या उद्धारामध्ये आलो, परंतु त्यावेळेस माझ्या आईला तिच्या शरीरामध्ये, तिच्या शारीरिक जीवनामध्ये नाही, परंतु तिच्या कामाच्या ठिकाणी, समाजामध्ये खूप साऱ्या लज्जेसाठी आणि खूप साऱ्या छळाचा सामना करावा लागला. It was purely on account of her suffering that I could draw closer to listen at least to what she was trying to tell me. और उनके इन क्लेशों के जरिए ही मैं उनके नजदीक आ सका, उनसे ये सीख सका जो मुझे वो सिखाना चाह रही थी. आणि त्यांच्या त्या कष्ट सहण्यामुळेच मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि ते मला काय शिकू इच्छितात हे मी त्यांच्याकडून शिकलो. I would listen, but I would not obey. मैं सुनता तो था, लेकिन आज्ञा नहीं मानता था. मी ते ऐकत तर असू, परंतु त्याचे पालन करत नसो. I was afflicted with a kind of sickness. मुझे ऐसी एक बीमारी से पीड़ित होना पड़ा. मी अशा आजाराने ग्रसित झालो. That sickness was called cricket. और उस बीमारी का नाम है क्रिकेट. आणि त्या आजाराचे नाव आहे क्रिकेट. I progressed quite well in the worldly way, and I thought that would be my profession. और संसारिक रीति से मैं उसमें काफी आगे बढ़ गया, और मैंने सोचा मैं उसी में अपना काम आगे बढ़ाऊंगा. आणि जगिक रीतीने मी त्यामध्ये फार वाढत गेलो आणि मी असा विचार केला की मी त्याला माझा पेशा बनवावे. Unknown to me, my God had other plans. लेकिन मैं नहीं जानता था मेरे परमेश्वर का मेरे प्रति कुछ और ही योजना है. परंतु मला ठाऊक नव्हते की परमेश्वराची माझ्या प्रति काही वेगळीच योजना होते. Once when I was sleeping in my room, it was the time of a festival where there were a lot of crackers being burst. एक समय में मैं अपने कमरे में सो रहा था, और उस समय एक त्योहार का वक्त था जिस समय बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं. एका दिवशी मी माझ्या खोलीमध्ये झोपलो होतो आणि तो सणाचा दिवस होता. त्या दिवशी फटाके वाजवले जात होते. I was woken up late in the night and I saw my room was full of smoke. और मैं देर रात को आवाज सुन के जग गया, और मैंने देखा मेरे कमरे में पूरा धुआं भरा हुआ है. आणि मध्यरात्री मी उठलो असताना मी पाहिले की माझी खोली संपूर्ण धुराने भरलेली आहे.
But when I went back to sleep, again it was as if someone was waking me up urgently and telling me to get up and get out of the room. और उसके बाद मैं दोबारा मैंने सोने का प्रयत्न किया, लेकिन तुरंत ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे जगा रहा है, मुझसे कह रहा है कि इस कमरे से तू बाहर जा. आणि ज्या वेळेस मी पुन्हा झोपण्याचा प्रयत्न करू लागलो तेव्हा मला असा भास झाला की मला कोणीतरी सांगत आहे की या खोलीतून लवकर बाहेर जा. All the implements of my cricket gear were under my bed. और मेरे क्रिकेट का जो भी गियर जो भी सामान था वो सब मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ था. आणि माझे सर्व क्रिकेट खेळण्याचे साहित्य ते सर्व माझ्या खाटाखाली ठेवलेले होते. When I went out of the room, I went to my parents' room and slept. But at midnight, my grandparents woke to a great sound of wood falling to the ground. और मैं अपना कमरा छोड़ के अपने माता पिता के कमरे में जाके सो गया, लेकिन रात के समय मेरे दादा दादी ने एक जोर का आवाज सुना जैसे कोई लकड़ी टूटकर नीचे गिरी हो. रात्री मी जाऊन माझ्या आई वडिलांच्या खोलीमध्ये झोपलो, परंतु माझ्या आजीने आणि आजोबांनी जसे काही एखादा लाकडाचा मोठा तुकडा खाली पडतो तसा आवाज त्यांनी ऐकला. They came and saw that my bed was on fire. उन्होंने आके देखा कि मेरे बिस्तर में आग लगी हुई है. त्यांनी येऊन पाहिले की माझ्या अंथरुणाला आग लागली आहे. And the sound was of the bed blocks falling down. और जो उस बिस्तर के टुकड़े आग से जलकर नीचे गिर रहे थे उसकी आवाज थी. आणि त्या खाटाचे लाकडी तुकडे जळून ते खाली पडत होते आणि त्याचा तो आवाज होता. That put a fear of God in my life. और उसने मेरे जीवन में परमेश्वर के भय को उत्पन्न किया. आणि त्यानेच परमेश्वराचे भय माझ्या जीवनामध्ये उत्पन्न केले. Now I wanted to obey my mother too. अभी मैं अपनी माँ की भी आज्ञा मानना चाहता था. आता मी माझ्या आईचे आज्ञापालन करू इच्छित होतो. Obeying her, I went for one of the meetings, which is in an old YMCA hall on the upper floor. और एक पुराने YMCA के ऊपरी घर में जो एक सभा चलाई जाती थी, वहां पर मैं अपनी माता की आज्ञा मानकर गया. आणि YMCA ठिकाणी एक सभागृह होते, त्या वरच्या खोलीमध्ये जिथे सभा चालते त्या ठिकाणी मी माझ्या आईचे ऐकून त्या सभेला गेलो. For me, I thought it was impossible to be saved, but at the end of that meeting, I could answer the altar call by God's grace. और मैं जो सोचता था कि मेरा उद्धार पाना तो असंभव है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह से उस सभा के समाप्त में मैंने प्रभु को ग्रहण किया. आणि मी असा विचार करत होतो की माझे तारण होणे अशक्य आहे, परंतु ती सभा संपेपर्यंत माझे त्या ठिकाणी मनाचे परिवर्तन झाले. Not only that, at the end of the meeting, God did not leave me alone, but He gave me two brothers who came and introduced themselves to me, and we had fellowship in Christ for a long time in that family. और इतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उस सभा के बाद परमेश्वर ने दो भाइयों को मेरे पास भेजा. उन्होंने मुझसे बात किया और उस सभा के बाद आगे भी मेरे जीवन में काफी समय तक उनके साथ प्रभु में एक संगति बनी रही. आणि त्या ठिकाणी परमेश्वराने मला एकटे सोडले नाही. ती सभा संपल्यानंतर दोन भाऊ माझ्याकडे आले आणि त्यांची आणि माझी ओळख झाली आणि त्यांच्यासोबत मी बराच वर्षभर संगतीमध्ये राहिलो. When I used to go to their house seemed only like a faith home, and all they used to talk about was Jesus and the love of Jesus. और उनके घर में जब मैं जाता था, उनका घर तो एक विश्वास भवन के समान था. हमेशा वो लोग यीशु मसीह और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में ही बात करते थे. आणि जेव्हा केव्हा मी त्यांच्या घरामध्ये जायचो, त्यांचे घर मला विश्वास भवनासारखे वाटत असे, कारण ते नेहमी प्रभू येशू ख्रिस्त व त्याच्या प्रीतीबद्दल बोलत असत. Due to oppositions within my family, I couldn't go for the meetings. I was a secret Christian. और मेरे परिवार में विरोध होने की वजह से मैं उन सभाओं में जा नहीं सकता था और मैं गुप्त रीति से एक मसीही बन गया. माझ्या घरातून विरोध असल्या कारणास्तव मी त्या ठिकाणी सभांना तर जाऊ शकत नव्हतो, परंतु मी एक गुप्त विश्वासी होतो. I could not attend tarry meetings, nor could I attend the Bible studies, or the Sunday meetings. मैं इंतजार सभा में या बाइबल अध्ययनों में या रविवार की आराधना में भी भाग नहीं ले पाता था. बायबल अध्ययनामध्ये, वाट पाहण्याच्या सभेमध्ये, तसेच रविवारच्या आराधनेमध्ये मी भाग घेऊ शकत नव्हतो. It is only the fasting prayers that I could go for, because those were during the day. और मैं केवल उपवास प्रार्थनाओं में जा सकता था क्योंकि वो दिन में चलाई जाती थी. कारण की मी त्या ठिकाणी उपवास प्रार्थनेला जायचो, कारण ती दिवसा असायची. But in the midst of those impossibilities also, the Lord anointed me with His Holy Spirit, and then enabled me to obey in the waters of baptism. और उस असंभवताओं के बीच में भी परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा और साथ ही साथ पानी का बपतिस्मा का आज्ञा पालन करने के लिए भी सहायता किया. आणि अशा अशक्यतेमधून देखील परमेश्वराने मला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दिला आणि मला पाण्याचा बपतिस्मा घेण्यासाठी मदत केली. At the same time, my worldly studies was going on, and I had to bunk tuitions to go for God's tuition.
और उसके बीच में मेरे संसार में भी मेरी पढ़ाई चालू थी और मेरे ट्यूशन्स को मुझे छोड़कर मैं परमेश्वर के भवन में सीखने के लिए जाता था. आणि त्याचप्रमाणे जगिकरित्या माझे सर्व इतर वर्ग चालू होते. ते वर्ग सोडून मी परमेश्वराचे जे वर्ग असायचो त्या ठिकाणी हजर राहायचो. But that created one more impossibility for me, that I could not understand what was happening in the worldly classes. और उसकी वजह से एक और मेरे जीवन में असंभवता पैदा हुई, और वो ये कि दुनिया में जो कक्षाओं में सिखा जा रहा था वो मुझे कुछ समझ में नहीं रहा. आणि त्याद्वारे माझ्या जीवनामध्ये अजून एक अशक्यता निर्माण झाली. ती म्हणजे ज्या जगाच्या वर्गामध्ये काय शिकवले जाते हे मला समजत नव्हते. I thought I was an okay student, but God had to break that okayness in my life too. और मुझे लगता था कि मैं एक ठीक ठाक विद्यार्थी हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे उस ठीक ठाक के स्तर को भी बदलना चाहता था. मी असा विचार करायचो की मी एखादा बरा विद्यार्थी आहे, परंतु परमेश्वर माझा तो बरेपणा त्या ठिकाणी तोडू इच्छित होता. I was studying to be an engineer, but I couldn't get an admission in the college where my father decided, so I had to change my course. और मुझे इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे पिता जहाँ चाहते थे उस महाविद्यालय में मुझे प्रवेश नहीं मिला. इसके लिए मुझे अपना कोर्स बदलना पड़ा. मला अभियंताचे शिक्षण घ्यायचे होते, परंतु ज्या महाविद्यालयामध्ये माझे वडील मला दाखल करू इच्छित होते त्या ठिकाणी न झाल्यामुळे मला माझ्या शिक्षणाचा तो विभाग बदली करावा लागला. The new course was very difficult. और जो नया मैंने पढ़ाई शुरू किया वो बहुत ही कठिन था. आणि जो नवीन अभ्यास मी सुरू केला तो फार अवघड होता. And I thought it was impossible for me to pass. और मुझे ये लगा कि उसमें मेरा उत्तीर्ण होना असंभव है. आणि मग मला असे भासू लागले की माझे उत्तीर्ण होणे अवघड आहे. Once out of desperation I cried the whole night, and my pillows were actually wet with tears, and I asked the Lord, I don't understand this particular problem, please show it to me. और एक रात में मैं ऐसे असमंजस इसमें पड़ गया और उसमें मैं रात भर रोता रहा. मेरे कपड़े आंसुओं से गीले हो गए. मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मुझे समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है. आणि एका रात्री मी माझ्या अंतरुणावर झोपलो असता माझी उशी संपूर्ण अश्रूंनी भरली आणि मी परमेश्वराला असा प्रश्न विचारू लागलो की हे परमेश्वरा, मला ह्याच्यातून तू उत्तर दे. And God, true to his word, as if he was teaching me on a screen, he showed me step by step, as if he was teaching the dumbest student in the class. और उसमें परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, और जैसे एक स्क्रीन में देख के सिखाया जाता है या फिर एक ऐसे मूर्ख विद्यार्थी को कक्षा में सिखाया जाता है, वैसे परमेश्वर एक एक करके मुझे सब कुछ सिखाने लगा. आणि त्यावेळेस परमेश्वर एखाद्या मूर्ख विद्यार्थ्याला ज्याप्रमाणे शिकवले जाते तसे टप्प्याटप्प्याने पायरीने एखाद्या स्क्रीनवर शिकवल्यासारखे परमेश्वर मला सर्व गोष्टी शिकवू लागला. Many people were making fun of me and my mother, saying that, oh, now you can't pass it, only a certain group of people can actually have the qualification to pass this particular exam. और उसके बाद में कई लोग मेरे माता का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये जो है ये इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता, इसके लिए एक कायदा होना जरूरी है, कुछ लोग ही है जो इसको उत्तीर्ण कर सकते हैं. आणि त्या ठिकाणी माझा व माझ्या आईचा लोक थट्टा मस्करी त्या ठिकाणी उडू लागले आणि ते म्हणू लागले की ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे एवढी सोपे नाही. एक अशा विशिष्ट पात्रतेचे लोक असतात, तेच ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकतात. But my God, who has other plans for me, he not only enabled to pass this exam, but one more exam similar to this. और मेरा परमेश्वर, उसने मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मदद किया, और केवल उतना ही नहीं, उसके अलावा दूसरा भी एक एग्जाम, उसके जैसा ही दूसरे के एग्जाम में भी पास होने के लिए मदद किया. परंतु परमेश्वराने माझ्यावर अशी दया केली की मी हीच परीक्षा नाही तर ह्या परीक्षेसोबत आणखी एक दुसरी परीक्षा देखील उत्तीर्ण झालो. I got a job and then lost it, and getting another job was impossible. मुझे नौकरी मिली, मैं और मुझसे वो नौकरी गंवा दी गई, लेकिन उसके बाद वैसी ही दूसरी नौकरी मिलना भी असंभव था. मग मला एक नोकरी मिळाली, ती नोकरी मी गमावली आणि पुन्हा दुसरी नोकरी मिळवण्यासाठी मी फार कष्ट सहन करत होतो. But my God delights in doing all these impossible things. He gave me another job, for which I was not the least worthy. मेरा परमेश्वर लेकिन सारे असंभवताओं को संभव करने वाला परमेश्वर है. उसने मुझे एक दूसरा नौकरी दिया. आणि माझा जो परमेश्वर सर्व अशक्य गोष्टी शक्य करणारा होता, त्या अशक्यतेमधून त्याने मला अजून एक नोकरी दिली. After this, it was impossible in our eyes that we could get a helpmeet for me in this faith.
और उसके बाद मेरे लिए इस विश्वास में एक जन का मिलना, एक संगिनी का मिलना एक असंभव बात थी. आणि मग माझ्यासाठी या विश्वासामध्ये, ह्या संगतीमध्ये एक सहजीवन साथीदार मिळणे अवघड होते. But God arranged that also beautifully in His time. लेकिन परमेश्वर ने वो भी अपने समय के अनुसार बहुत ही सुंदर रीति से करके दिया. आणि परमेश्वराने त्याच्या योग्य वेळेमध्ये ते देखील फार सुंदरतेने केले. Our life was not a bed of roses, as they say. और जैसे कहा जाता है कि जैसे फूलों में चलने वाला जीवन, ऐसा नहीं था हमारा जीवन. जसे म्हटले जाते की आपले जीवन त्या गुलाबावर चालण्यासारख्या एवढे सोपे नाही. But God took us through many trials and tribulations, through many difficulties, only to break us, to grind us, to pound us into dust. और परमेश्वर हमें कई प्रकार की कठिनाइयों से, कई प्रकार के परीक्षाओं से, मुसीबतों से लेकर गया, जिससे वो हमें मारे, जिससे हमें चूर चूर करे और हमें एक धूल के समान बना दे. परंतु परमेश्वर अशा खूप साऱ्या समस्येतून, अशा कठीण मार्गातून, अशा परीक्षेतून घेऊन गेला की त्याने आम्हाला कुटून कुटून त्या धुळीप्रमाणे त्याच्यासोबत मिळवावे. We didn't have a child of our own to call our own for many years. और बहुत सालों तक खुद का कहने के लिए हमारे पास एक बच्चा नहीं था. आणि आम्हाला खूप वर्षापासून स्वतःचे एक बाळ म्हणवण्यासाठी बाळ नव्हते. And many people would come up to ask us in what's the good news. बहुत से लोग आके हमसे पूछते थे आपका शुभ समाचार कब है. आणि मग नेहमी आम्हाला लोक येऊन विचारायचे की काही चांगली बातमी आहे काय. And honestly, I would get irritated at those kind of questions. और ऐसे सवाल सुन के मैं बहुत परेशान हो जाता था. आणि मग तशा प्रकारचे प्रश्न ऐकून मी विचलित होत असे. One day I asked the Lord, you please tell me yes or no. एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु तू ही जवाब दे, हाँ या ना. आणि मग मी एक दिवस परमेश्वराला प्रश्न विचारला की परमेश्वरा हो की नाही तू मला सांग. I told him, Lord, I know you could, but the question is whether you would. मैंने कहा हे परमेश्वर तू कर तो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि तू ये करना चाहता है कि नहीं. आणि मी त्या ठिकाणी परमेश्वराला म्हणालो, हे परमेश्वरा तू तर हे करू शकतोस, पण मला सांग की तू हे करशील काय. So in my little mind, I thought I'll put up test for the Lord. एक छोटे मन से मैंने सोचा मैं प्रभु के लिए एक परीक्षा रखूंगा. आणि अशा एक संकुचित मनाने मी परमेश्वरासमोर एक लहानशी कसोटी ठेवली. In my job, to travel by plane was a big thing for me. मेरे इस नौकरी में मेरे लिए एक जहाज में, हवाई जहाज में यात्रा करना एक बहुत बड़ी बात थी. माझ्या कामाच्या ठिकाणी विमानाने प्रवास करणे ही माझ्यासाठी एक मोठी गोष्ट होती. And I said, Lord, it is impossible that I can travel in a class that is higher than my entitlement. और मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे जिस स्तर का वेतन मिलता है उस स्तर से ऊपर इस हवाई जहाज में यात्रा करना तो मेरे लिए असंभव है. आणि त्यावेळेस मी परमेश्वराला म्हटलो की मला जे वेतन मिळते किंवा ज्याप्रमाणे माझी पदवी आहे त्याच्या वरच्या वर्गात प्रवास करणे मला परवडणार नाही किंवा शक्य नाही. If you do it, then I'll take it as a yeah from your side. यदि तू इसको संभव बनाएगा तो मैं तेरी तरफ से समझूंगा कि तेरी तरफ से हाँ है. आणि मग हे जर तू माझ्यासाठी शक्य करशील तर मी असं समजेल की तुझ्याकडून हो आहे. And God in His mercy did that also for me. और परमेश्वर ने अपने करुणा से वो बात को भी संभव कर दिया. आणि परमेश्वराने त्याच्या दयेद्वारे ती गोष्ट देखील शक्य केली. I told this to the workers in charge then, and then I promptly forgot all about it. और फिर मैंने इस बात को उस समय के सेवकों से कहा और उसके बाद मैं ये घटना को भूल गया. आणि मग मी ही गोष्ट परमेश्वराच्या सेवकांना सांगितली आणि कालांतराने मी विसरून गेलो. After almost 19 years, the Lord gave my wife conception. और उसके लगभग 19 साल के बाद मेरी पत्नी को परमेश्वर ने गर्भवती होने के लिए मदद किया. आणि जवळपास दीर्घ 19 वर्षांनंतर माझी पत्नी गर्भवती झाली. Through all these years, it was the prayer of our saints who were on their knees and praying for us, both the workers and the believers. इतने सालों से बहुत से परमेश्वर के सेवक और बहुत से विश्वासियों की प्रार्थना का ये जवाब था, जिन्होंने घुटने में खड़े रहकर हमारे लिए प्रार्थना किया. आणि कित्येक वर्षापासून कित्येक सेवकांनी आणि कित्येक विश्वासणाऱ्यांनी गुडघ्यावर येऊन आमच्यासाठी प्रार्थना केल्याचे ते उत्तर होते. The first stage itself was impossible, but the next few stages seemed even more impossible. और उसमें जो पहला स्टेज है वही असंभव था, लेकिन आगे और बढ़ना बहुत ही कठिन था. त्याच्यामध्ये असणारा पहिला टप्पा तोच अवघड होता आणि त्याच्या पुढचा येणारा टप्पा तर अजूनच अवघड होता. My wife had certain conditions through which it was said in medical wisdom that she could not bear a child.
और मेरे पत्नी का जो जैसा शारीरिक हालत था उसकी वजह से कहा गया कि विज्ञान की तरफ से देखा जाए तो आपको एक बच्चा होना असंभव है। आणि जर माझ्या पत्नीच्या आरोग्याची अवस्था पाहिली असती तर वैज्ञानिकरित्या तिला मूलबाळ होणे किंवा ती गर्भवती होणे शक्य नव्हते. But we had only the word of God to lean on, which said that he who has given the strength to conceive will also bring the strength to bring forth. और लेकिन हमारे पास केवल परमेश्वर का वचन था टेक लेने के लिए, और जिस परमेश्वर ने हमें मदद किया कि मेरी पत्नी गर्भवती हो सके, वही परमेश्वर ये भी सहायता करेगा कि हमारा बच्चा सही सलामत पैदा हो. आणि त्या ठिकाणी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे आश्रय नव्हते, फक्त परमेश्वराच्या वचनावर आम्ही आश्रय घेऊ शकत होतो. आणि त्याद्वारे ज्या परमेश्वराने माझ्या पत्नीला गर्भवती केले त्याद्वारे परमेश्वर आम्हाला ते मूल देखील देणार होता. We were called among many names educated fools. आणि आम्हाला खूप साऱ्या लोकांमध्ये शिकलेले मूर्ख असे म्हणत असत. हम जो है पढ़े लिखे मूर्ख करके कहलाए जाते हैं. And in the time of her delivery also she had many complications. और उनके डिलीवरी के समय में भी कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हुए. आणि त्यांच्या डिलिव्हरीच्या वेळेस देखील खूप साऱ्या प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या. Thankfully I did not have an understanding of medical terms. लेकिन मैं उसके जो मेडिकल तौर से जो बातें कहती हैं उनको मैं जानता नहीं था. परंतु जे काही आरोग्य रीतीच्या ज्या गोष्टी ते आम्हाला सांगत होते ते आम्हाला ठाऊक नव्हते किंवा समजत नव्हते. In simple terms they told that my wife had suffered a heart attack during the delivery process. और जो बच्चा पैदा होने के समय में मेरी पत्नी को हृदयाघात महसूस हुआ. आणि त्या ठिकाणी डॉक्टरांनी आम्हाला सोप्या भाषेमध्ये समजावले की त्या प्रसूतीच्या दरम्यान माझ्या पत्नीला हृदयाच्या विकाराचा झटका येऊ शकतो. But God did a wonder and a miracle in our life that he gave us a healthy girl. लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा काम किया और परमेश्वर ने हमको अच्छा स्वास्थ्य आरोग्य बेटी को दिया. आणि त्या ठिकाणी परमेश्वराने आमच्यावर दया केली आणि अद्भुत रीतीने आम्हाला एक सुंदर आणि चांगली तंदुरुस्त अशी मुलगी दिली. Through many dangers, trials and toils, he has brought us thus far. और कई खतरों के बीच में से, परीक्षाओं के बीच में से वो यहाँ तक हमको लेकर आया है. खूप साऱ्या संकटातून, परीक्षातून, समस्येतून परमेश्वर आतापर्यंत या ठिकाणी घेऊन आला. And in conclusion I can say it is only his amazing grace that has brought us thus far. और अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि ये परमेश्वर का महान अनुग्रह ही है जो हमको यहाँ तक लेकर आया है. आणि शेवटी मी असेच म्हणेल की ही परमेश्वराची महान कृपा आहे की त्याने आतापर्यंत आम्हाला या ठिकाणापर्यंत चालवले आहे. We request your prayers that together with you all we may be seen at his soon coming. आपसे प्रार्थनाओं को निवेदन है जिससे आप सब लोग के साथ हम भी प्रभु के आगमन में उठाए जाएं. आपल्याकडे प्रार्थनेची विनंती करून मी तुम्हाला विनंती करतो की आम्ही देखील तुमच्या सोबत आगमनामध्ये दिसावे. Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो. परमेश्वराचा धन्यवाद असो. For all the goodnesses which the Lord has done in the life of this beloved brother and his family, for having delivered him from that danger, for having saved him, anointed him, for having given him a decent job, and apart from that, they waited for a child for a long time. God did that also for God's glory. For all the goodness of the Lord, let's praise God. परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किए सारे अद्भुत और अनोखे कामों के लिए, जो परमेश्वर ने इस सुंदर उद्धार दिया, हर एक प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से परमेश्वर ने बचाया, नामुमकिन को परमेश्वर ने मुमकिन करते हुए एक अच्छा नौकरी दिया, और कई लंबे समय से जो बच्चे के लिए वे लोग बाट जो रहे थे, परमेश्वर ने समय पर उन्हें एक संतान दिया. इस प्रकार परमेश्वर ने केवल उनके जीवन के सारे भलाइयों के लिए आइए हम परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord.